and they've kept their chances alive of qualifying for the semi-finals. And I've got something here for them, which they probably don't need. It's come from my hotel, very comfortable hotel. It's got best hotels in the world written on the outside of it. There it is. There is the straw that India are clutching at as they try their hardest to get to those semi-finals. If you want to borrow it, let me know. So yeah, 2 results. Let's show you the results that have happened today then, as we near the end of the group stages. And if we can just have a look at those cards tonight, that would be lovely. Thank you. Scotland, India. 85 Scotland, India 89 for 2, but not just 89 for 2, 89 for 2 in 6.5 overs. It was absolute carnage. India winning by 8 wickets, a very, very professional, very inspired outing for them, and that will do them a power of good. The other game we had a look at today as well, the earlier game, that was New Zealand against Namibia. New Zealand asked to bat first. One stage, actually, they were struggling. I have to say, this Sharjah pitch has undone a lot of people in this tournament. And up until the last 5 overs or so, New Zealand were looking pretty ordinary. They cruised through those last overs, 163 for 4. And Namibia, in reply, never up with it. They certainly didn't cruise through the last 5 overs and ended up losing by 52. So, the fascinating thing then with the points table is this. New Zealand, with that win, go up to 6. They still have 1 game left against Afghanistan. If they can win that, that is the end of that story. They will be in the semi-finals. If somehow Afghanistan win the game, and no one's ruling that out, then India's final match, which they can pretty much be sure of 2 more points, will put them all on 6 points. This is what it's all about. The net run rate thing means that India at the moment have the best of it between New Zealand, India and Afghanistan. So today's win in that speed, at that speed, puts them in a very good position, but only if New Zealand lose their final game. So there you are. That is the summary of the day for you. Well done. That was as quick as the Indian batting innings. Yeah, and this straw could be, I'm going to keep this straw here just in case. Actually, in England and Pakistan are quite safe, so we don't need it. All right, Sana, over to you. So yeah, I guess अगर हम एक दफ़ा टेबल देख सकें, अगर पॉसिबिलिटी है, उर्दू में भी मैं बता दूं अपने नाजरीन को जो पॉइंट्स टेबल है, उसके बाद हम अपने पैनल के साथ भी डिस्कशन जारी रखेंगे. और ये जो टेबल है, इसमें आप देखिए जो बात कर रहे थे डेविड भी, कि न्यूजीलैंड के 6 पॉइंट्स हो गए, उनका 1 मैच अभी बाकी है जो अफगानिस्तान के साथ होगा. अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाता है, वो 8 पॉइंट्स पे आके पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाता है. अगर वो मैच वो हार जाते हैं तो अफगानिस्तान भी 6 पॉइंट्स पे आ जाएगा, और इंडिया अगला मैच अपना नामीबिया के साथ खेलेगा, वो भी 6 पॉइंट्स पे आ जाएगा. पर उसमें जो इंडिया ने आज 6.3 ओवर्स में मैच ख़त्म किया है, इंडिया के पास चांस बहुत हो जाएगा कि उनका रन रेट अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से ऊपर होगा. तो फिर इंडिया हॉट फेवरेट हो सकता है इन केस अगर अफगानिस्तान जीत जाए. जी राशिद भाई, क्या समझते हैं जो जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई और न्यूजीलैंड का स्ट्रगल जो हो रहा है बैटिंग में, ओवरऑल उस कन्विंसिंग तरीके से न्यूजीलैंड नहीं जीत सका जो इंडिया इस वक्त इंडिया ने दिखाया. न्यूजीलैंड 52 रन से जीता है T20 में 52. नहीं, वो बात अब की ठीक है. लास्ट मैच 16 रन से जो जीते थे वो थोड़ा सा दोनों मैचेस थोड़े से क्लोज हो गए. हाँ, लेकिन तकरीबन 17 ओवर में इनके 117 थे, और उसके बाद जो लास्ट 18 बॉल पे रन किए हैं वो ज़बरदस्त है. लेकिन इंडिया ने जाहिर सी बात है उनके पास और कुछ भी नहीं है. आज के मैच में इनको नेट रन रेट अपना अच्छा करना था, और किया भी उन्होंने. अफगानिस्तान से ऊपर चले गए. अफगानिस्तान इस वक्त प्लस 1.28 के ऊपर है, और इंडिया प्लस 1.62 के ऊपर आ गया है. और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा. लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या होगा. लेकिन सुकून से रहे, न्यूजीलैंड आराम से थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए. लेकिन आज जैसे उन्होंने 14 ओवर तक स्ट्रगल आज किया वाला है, मैच नहीं होगा. देखिए टॉस पे बड़ा फाइटल नहीं इफेक्ट हो सकता. आज टॉस उन्होंने जीता, इनको बैटिंग दी, 14 ओवर्स में 87 रन पे. जो अफगानिस्तान की बात करें, हिस्ट्री जो हमने देखी इस इवेंट के अंदर देखी है, वो शुरू अच्छा करते हैं. गुरबाज 2-3 छक्के मारेगा या जज़ई आके, लेकिन पूरा गो थ्रू नहीं करते ये लोग. ये 7-8 ओवर में 10 रन के रन रेट से भी चले जाएंगे. लेकिन क्या है, टोटल कितना है 130. ये इशू है अफगानिस्तान की टीम में. और
प्रोफेशनल टीम है, न्यूजीलैंड कैप्टनसी उसकी लीडरशिप क्वालिटी, तो लगता नहीं हाँ कोई ऐसा हो जाए कि वो लंबी इनिंग खेल जाए, कोई शहजाद हो या गुलबाज हो या नबी हो, तो डिफरेंट गेम हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री जो बताती है इस इवेंट की, वो इतनी ज़्यादा साथ नहीं दे रही अफगानिस्तान की। बिल्कुल। और 3 स्पिनर्स आज खिलाए इंडिया ने, पिच को लगता है बहुत अच्छा रीड किया। जडेजा की बॉल कुछ ब्रेक भी हुए, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। शामी को खिलाया, अश्विन को भी खिलाया और चक्रवर्ती को भी खिलाया। 3 स्पिनर से गए, पिच को भी आज अच्छा रीड किया इंडिया की टीम ने। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी उनके पास 3 पेसर वैसे भी अवेलेबल थे। पांड्या की सूरत में उनके पास एक ऑलराउंडर है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। चक्रवर्ती का चांस लेके थोड़ा सा मिस्ट्री है, तो उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह टॉन सेट के ऊपर से बुमराह ने जिस तरह उसको आउट किया, फिर अश्विन को अगर आप देखें, शामी को देखें, जडेजा ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है, जो पहला विकेट उसको मिला वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, क्योंकि वो एक आइडियल लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक आइडियल बॉल होता है जिस तरह उसको बॉल किया। तो आई थिंक बड़ा अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया। जो भी जो टारगेट सेट किया था इंडिया ने टॉस जीत के, तो आई थिंक सारे प्लेयर ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। और फिर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी कि उनके बैट्समैनों को उनके सामने एक जो उनका प्लान था कि हम चेसिंग में जाएंगे और हमारे सामने बोर्ड पे एक टारगेट होगा, तो हम उसी हिसाब से उसको चेस करेंगे और अपने रन रेट को। तो जिस तरह के राहुल ने और शर्मा ने उसको रिप्लाई किया और जिस तरह एग्जीक्यूशन उन्होंने किए, तो आई थिंक आप कह सकते कि टॉप बैटिंग लाइनअप तो उनको वैसी भी थी, लेकिन वंस अगेन बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन और बैटिंग, मज़ा आया देखने का। बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड व्हाट दिस मैच हैज़ डन that we cannot just talk about India and Scotland. We have to, Afghanistan comes in, New Zealand comes in, and the discussion just takes over. Well, as you know, Sana, we have plenty of time on these shows to meander our way around all the discussions, all the salient points, and consider everyone's best interests. Apart from anything else, that was a very, very clinical, impressive, dominant performance, was it not, Viv? For sure. India did what it had to do, to not just basically get over the line, but also to increase their run rate, which I think was very special. The only thing that they will be asking now is for someone else to do a job for them in Afghanistan. They'll be hoping that Afghanistan can do a job on New Zealand. And it's tough when you have to do that, especially one of the better teams in the world, having to ask one of the teams that are not so fancy to do that. That's going to be something that worth waiting for. I think they had 2 bad games in India because of I think the tougher oppositions and tough conditions. On flat pitches, probably India is the number 1 or England number 1 team. But where there is something in the pace, something not coming up, stopping or turning or a bit of seam, that's what hurts them early on. And I think still what we have seen between stronger teams and the associates, they can tackle medium pace, simple bowling, but when it comes to pace and there was spin, quality spin, all struggle. The other day, Australia smashed Bangladesh and India today, and I mean, like, this is the story. This is the limitation of associate cricket. Yeah, but this again is the thing. We're on good pitches, or pitches which offer something. So a bit of bounce, bit of pace. Batsmen can play their shots. Indian batsmen love that. On pitches that are low and slow, everyone, like New Zealand today, we'll come to them later, but New Zealand today struggled for 15 overs. Then came Phillips and Neesham, who I guess got him out of trouble. When I looked at the telly and saw the score, I said, wow, Manipia's doing pretty well here. Yeah. But as you say, some class in Neesham, who I think is a renowned hitter of a cricket ball. Phillips stepped in. And obviously, when they got to 163, felt that they were in a sort of safe zone in order for them to compete and defend. Yeah, sure. Because in Sharjah, if you try to play a normal cricket, it's so hard to even hit a boundary. Skidding through, staying low, heavy outfield, it has to go under sixes. Otherwise, if you play proper cricket, hitting the gaps,
you're going to end up like 140, less than 140. So they realized that, look, oh God, we are in trouble. So just smash it. So this is how they Or try to smash it. try to smash it. With India and their bowling today, though, I mean, I'm sort of mischievously pointing out now Ravi Jadeja, who was man of the match in the end for picking up those wickets. Was it 3 for 15 off his 4 overs? And of course, he's a man you've talked about over the last couple of weeks as being steady, but nothing special. Okay, I know there is this gap between India, top side, Scotland, emerging sides, plucky, braveheart as you described them. Bravery is one thing, skill is another. And they just don't pick up the subtle variations, do they, in the same way? I mean, look, the quality of Jadeja is that pause he took, where he reads the batsman. All the bowler, Ashwin, his biggest strength is the last second pause and reading the batsman and then varying the length. It's about are you used to it playing something like that smart bowler? This is what it's happening. If it's come to 145, they have no idea. They're late. If it's something quality spinning, if something to read, they can't. Their ball. Yeah, that's right. It's a new language. Yeah, it's a new language for them. And even a smart bowlers. I mean, Jadeja is playing IPL in India, so how difficult it is for him to check what's going on the batsman's mind. And he's very shrewd, very clever. That's his main strength. He's not big turner of the ball, but varies pace. He read the batsman well. Turn one today, though. I mean, that's what happens if you're Scotland. You suddenly get the one that turns. Yes, and the other thing about Jadeja's 3 wickets is that all the other bowlers put a lot of pressure on the batting lineup already. Yeah. So when you, as a spinner, have it's kind of a platform set for the middle order when the top order performs and the middle order just have to come and do their stuff. So it's the same for Jadeja also. All the bowlers were performing really well. There were a lot of dot balls, some wickets there. And he just had to come, bowl some dot deliveries. Which, I mean, all makes sense, absolute sense, and which is why the best sides, the sides that are likely to be in the semi-finals, and the sides that are likely or possibly going to get to that final, will have that depth in an attack. Yes. To do 2 things. One is to take advantage of early success and then put pressure on. The other is to change plan if need be. Yes, but the point of Aaqib, I mean, why he's been able to take these 3 wickets against Scotland, because these top bowlers were able to take wickets against Scotland. But if they are not going to take wickets, it's unlikely that Jadeja could come and take 3 wickets. He can take 1 wicket or 2 wickets. Maybe. So I mean, that's the difference between having Jadeja or a proper leg spinner or a mystery spinner. But all credit to him. I mean, he's done well today. And one of the things that I've noticed over the years during the T20 tournaments and many other tournaments that India would have played, Captain Kohli has a lot of faith in the JJ. He seems to be the go-to man, regardless of whatever. And he have not let his captain down on any occasion. Yeah. Brilliant fielder also can contribute with the bat. Rashid bhai, bowling first, आज 6 टॉस के बाद पहला टॉस जीता है विराट कोहली ने, 7वां टॉस. आज बर्थडे थी ना उसकी तो. अच्छा, विराट की. अच्छा, तो बस फिर उसी वजह से शायद गिफ्ट मिला उनको. गिफ्ट अब ये नहीं पता गिफ्ट किसने दिया है. चले नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी. कोहली टॉस जीता है. तो हम थोड़ा सा अगर ग्राफिक्स भी देखें डिफेंडिंग और चेजिंग के इस वर्ल्ड कप के टॉसेस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अगर हम देखें कि शारजा में 9 मैचेस हुए हैं, 4 मैच डिफेंड हुए हैं और 5 मैचेस में टीम्स ने चेज किया है. दुबई में अगर देखें तो सिर्फ 1 ही मैच को डिफेंड किया गया है, 9 मैचेस को चेज करने वाली टीम ने जीता है. मस्कत में जब मैचेस हुए तो 4 डिफेंड हुए, 2 चेज हुए, और अबू धाबी में भी अभी भी तकरीबन बराबर के करीब आने वाला है. 5 डिफेंड कर सके टीम्स और 7 मैचेस को चेज किया गया. तो अब ऑब्वियसली नज़र यही आ रहा है कि चेजिंग का पलड़ा भारी है. ज़्यादा टीम्स ऑब्वियसली चेज कर पा रही हैं इस टूर्नामेंट में. तो टॉस का रोल अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट मिक्स एंड मैच कह सकते हैं आप. क्वालिफायर राउंड में कुछ ऐसे मैचेस हुए जिसमें स्ट्रगल कर रहे थे. इनके शुरू के मैच फर्स्ट वीक अगर हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप के,
उसमें टफ अपोनेंट एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, उसमें किसी ने चेज किया किसी ने नहीं किया, लेकिन अब लास्ट इस वीक में अगर देखते हैं तो ज़्यादा चेजिंग हुई है क्योंकि प्रेशर हट गया था इंडिया के ऊपर से 2 हारने के बाद। जाहिर सी बात है वो प्रेशर नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया वीकर साइड से खेल रहा है, इंग्लैंड वीकर साइड से खेल रहा है, पाकिस्तान वीकर साइड से खेल रहा है, इसलिए सेकंड बैटिंग इजी हो गई। तो इस वजह से तमाम मैचेस उठा के देखें, अगर मैं आपको मवाजना करता हूँ जो मैचेस हुए, इंग्लैंड श्रीलंका तो बेसिकली इंग्लैंड फेवरेट थी, 26 रन से जीता। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीता। पाकिस्तान नमीबिया, पाकिस्तान 6 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड 16 रन से जीता। इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया 66 रन से जीता। इसी तरह से आज के मैच को भी देख लें तो वीकर साइड और स्ट्रॉन्ग साइड से मैचेस हुए हैं। कल या परसों जो मैच होने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच है शायद, या ऑस्ट्रेलिया का, वो मैच देखने वाला होगा। वो मैच तगड़ा एक मैच होगा जो कि आप कह सकते हैं कि इसमें हमें देखना है कि कौन चेजिंग पे जाता है कौन नहीं जाता, क्योंकि अब 2 मैच लास्ट के जो वो डिसाइड करेंगे पूरे वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका सेमी में, अफगानिस्तान ये न्यूजीलैंड या इंडिया सेमीज में। तो ये करंट मैचेस होंगे, इसमें हमें देखना पड़ेगा। वैसे चेंज आया इस नवंबर में, अगर देखें मैचेस में चेंज आया, लेकिन हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैचेस नहीं हुए। 77 रन किए, 74 रन किए, 82 रन किए। राशिद जब ये जाएंगे सिंगल मैच अंडर लाइट्स ड्यू फैक्टर, आई डोंट थिंक कोई भी रिस्क लेना बनता है। यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क बाय बॉलिंग सेकंड। इफ यू हैव अ चॉइस you got to go for chasing on all 3 grounds. No, I think the semis and the final is in Abu Dhabi. No, sure, yeah, you got. I think one semi Dubai, one Abu Dhabi. Final is in Dubai. Yeah, similar sort of conditions, and when you're going into a semis and final, you don't want to take any chance of unnatural, more than your ability, a chance which is not in your control. आकिब भाई इसमें 2 चीज़ें और भी है जो मेरे ख्याल से फैक्टर हो सकते हैं। एक तो जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो लाइक 15-20 दिन पहले हुआ था, तब मौसम इतना वो चेंज नहीं हुआ था। अब मौसम भी वहाँ पे थोड़ा सा ठंड आ गई है, तो एक तो ये कि ड्यू फैक्टर ऑब्वियसली पहले स्टार्ट में इतने नहीं पड़ रहे थे। और बाकी अगर हम तीनों वेन्यू की अगर हिस्ट्री भी देख ले तो पास्ट में जब हम खेलते थे लाइक PSL के मैचेस, तो हमने पहले भी कहा था वर्ल्ड कप के स्टार्ट में कि यहाँ पे पिचेस अर्ली ऑन थोड़ा सा मुश्किल होते हैं जो कि बाद में थोड़े से बेहतर हो गए। अबू धाबी के पिचेस आप देखें या दुबई के देखें, सिर्फ श्रीलंका में डिफरेंस नहीं आई, बाकी दोनों वेन्यू पे डिफरेंस आ गई, क्योंकि अर्ली ऑन वो ज़्यादा वो पिच को ज़्यादा पानी देते हैं और उसको प्रिपरेशन में ना फिर जब सेकंड हाफ शुरू हो जाता है तो PSL में भी इस तरह हुआ था कि बाद में जो ना पिच ज़्यादा अच्छे हो गए और लंबे स्कोर शुरू हो गए। लेकिन जो फियर था ना कि लॉट ऑफ क्रिकेट, IPL and then this World Cup will be dusty and not compact pitches, but they surprised people because they look after well, they thought about it, gave enough water and leave enough grass to leave the pitches till the end in a good condition. So day by day it's getting better. Yeah, I would agree, and I think we should give credit to the ground staff, the groundsmen who've looked after these, as you say, very busy stadia. I mean, for the last, 4 months or more, there's been sort of solid In cricket. Sharjah, it will make no difference if you have 6 games a week or you have 1 game a week. Yeah. It's not going to make any difference because the same method they apply after a month, after overnight. Yeah, and at least I think actually the Abu Dhabi pitch is the one that looks as though it's got the most life to it. But I think I'm optimistic, shall we say, that the pitches we will get in a week's time or so for those semis and that final will be the right sort of pitches for the climax this tournament. Yes. I'll keep my fingers crossed. I'll clutch at this straw as well. Yes, hopefully the toss will not Well, play as big a role because of the pitch. I'm afraid I have a suspicion that Aaqib is very right, that the trend will be maintained, and that if you do win a toss at that stage, you'll probably stick him in. Right, let's take a break. Lots more to discuss tonight after these 2 games. For now, though, it's... Game on! Game on!